Okay, here you will basically blank database. When you open MS Access, it asks you from where to start. So you have to click on blank database, and you can give the name of database here. Okay, it has been double clicked, so database is by default database 5 name is given. तो यहाँ पे जब आप database open करेंगे तो यहाँ पे MS Access जो है ये environment आपके पास open हो जाएगा. इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक brief कर देता हूँ regarding database. 1 second. So this is database presentations. So little brief I will cover from here, then I will move to database access. So remember, database basically is a systematic collection of data. Means a database is a place, a system where you want to store your data, you organize your data, and you access that data. So basically, the database can be manual and practical. So they support electronic storage and manipulation of data, so that you can manipulate your data using any software. यहाँ पे जब जिस सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे, that would be a access. So database make data management easy. The main purpose of database is to easily handle the data management. So there are different types of database. Example in the real life you will find like hospital management system, school management system, retail software, hotel management system, building management system. These are all basically such kind of database. So an online telephone directory uses a database to store data of people, phone number, and other contact details. Just give an example. The purpose of database, we have to access data, view data, and edit data using database. So for that purpose, we need to have a software like MS Access, SQL, MySQL, different software available to implement the database. Database is a collection of related files. Remember, database is basically combination of related files, and in database we call file table. So the purpose of table is to hold data. So table is a combination of row and columns, and column also called field and row also called tuple. Remember, table hold data called record. Whatever you view on table, they are basically record. So each table must have a unique field which is called primary. So remember, different a database will have a different tables, and these tables must be related to each other. Like if you talk about student database will have different table like student personal table, teacher table, class table, examination table, or attendance table. So there would be different tables, but must be related to each other. They will be connected through primary key. So each table will have a primary key. The purpose of primary key is to identify unique record in database. Because database, the main purpose of database is to provide unique record of each student or patient in hospital. Okay. Now moving to next slide, then I'll discuss it practically. So what is database? Basically, using primary key, data can be accessed from table. Table can have 1,000 and 1,000 of records. So to access any record with filtering, we will use primary key with the query. Using primary key, table can be linked with each other. Okay. We have to establish a link between tables. So these tables must be linked with each other. So when primary key transferred to another table, then it is called foreign key or reference key in that table. Remember, a primary key, wherever we have defined the primary key, so it will be when transferred to another table, it establish a link between two tables, and then the field which have been transferred from one table to another table, at the table this will be called foreign key. Primary key cannot be duplicated and null in its table. Whatever field you define as the primary key, so it can never be duplicated.
or even you cannot leave it blank. Okay. The primary key example is student ID or NIC number, as I told you. Remember, database has 4 basic elements or objects. Table, the purpose of table to hold data. Query, to access or view or edit data from single or multiple tables. Using query, I can access record from the table, from single table or multiple tables. So I have to write a query. Form, used to enter data into tables. It is a user interface. Through this, a user can enter record, and that record will be held by tables. Report, used to view data or results from single or multiple tables. Or query, using query for further decision making. The purpose of report basically to take a decision. This is basically a little brief about database. Now remember, now you need to understand how to establish a database. So first I tell you how to establish a database. So Arsh, is this clear? Yes, sir. Okay. Rehan, is this clear? Yes, sir. Okay, good. So now I'm coming to establish how to make a database access. Okay. When you open database, here you will find an environment of database. Here you can define a table. A table can be created from this option. You can create a table from here. For creating table, you have to click on table design. This table will be open. There are 2 tables already. Table 1 is created, and table 2, this one you can create. Field column means attribute of table, like the student ID. You can define here student ID. Data type tells the basically what kind of data can be data type basically tells a system so what kind of data we can store in memory. So we have to tell every time whatever field we are using, its data type must be defined. Like student ID can be a number. Normally it is number, but you can also define it as a short text. Okay. And student name, here you can define student name. Name can be a short text, or student ID, I think I should be number. Student ID, as I told you, can be defined as a primary key. So you can assign this field as a primary. जिस field को आप primary key बना देते हैं, that field will be unique. Or okay, in this field you cannot enter duplicate data. I will show you. Okay, and this field cannot be blank. Why we have to define primary key? Because we want one field must be unique through which we can access the other record. Okay. Further, we define here father name. You can define field, and here you can define long text or short text. Normally it is short text. Address. Okay. And date of birth. So here you can define basically date and time, data type. This is description column. Here you can describe basically regarding field, the purpose of field. Okay, and these are some parameter, characteristics, we can say that, or feature on each field we can define. So later on I will discuss all these things as per requirement, so that at that time you can understand. Here just I want to tell you how to basically create a table. Now you will close this one. It will ask you to save changes. So I have saved. Okay. Here you can define the table name, like I give the name of student. Okay. So this is student name. Now double click. You will see tabular view of table. Here you can enter record, like I enter 101. Student name can be like Arsh, or
father name X Y Z. ठीक है. Address maybe Karachi. You can write the name of city. Date of birth you can choose from here. Okay. Harsh, what is your date of birth? 16th January 2009. Okay, good. 16 January 2009. Here you can. Okay. Second student, if I put the same record 101, now see, if I click here, what it says, the changes you requested to the table were not successful because they would create duplicate. As I told you, the fields which you have defined as primary key cannot be duplicated, even cannot be blank. Okay, I'll show. So I have to change this data. It can be 102. So student ID must be unique. Okay, as you got roll number or student ID from your school also. Like you got candidate ID from CI for paper purpose. Here you can define Rehan. Okay, ABC. Karachi, Lahore. We can say Lahore. Okay, Rehan, what is your date of birth? 27th of December, 2007. Okay. 20 December 12, 2007. Let's say there is a problem. So it is taking month first, then date, and then year. Next record, I am like leaving this record blank. Okay. And what we call, okay, first I define the record. Then I move to another record, this one, and then I make it blank. So the message you must have seen that you must enter a value in the student ID. So as I told you, the primary key को आप blank नहीं छोड़ सकते. The field you have defined as primary key, it could not be blank, or even it could not be duplicate. Okay. Okay. So I have to define the fields. As I have recorded, basically I have created a row. Remember, student ID is a column, student name is a column, father name is a column, address is a column, date of birth column. The other name of column is field or attribute. But from left, if you see from here, like this one, what is called, like this one, this arrow indicates a row. This is second row, this is third row. Row called tuple or record, remember, in database. Okay. Now this is the way how to create a table and how to give how to give data using a table. But the main thing is that now I will show you how to basically work on database from the paper point of view. Okay, you must be given a source file to create the database. So this was the basic introduction how to create a table, how to assign a primary key. We will do all things. So closing it. First of all, I open the paper so that you can understand. Okay. Is this viewable? Can you see all of you? Yes, sir. Okay. So ये आपको basically this is the paper of basically I'm showing you. This is paper 2, March 23. It is the latest paper. Okay. Further, I will most latest paper I will also discuss. These March 23. It's the paper 2. 2 hours 15 minutes you will be given. In there, and you have to do document production first, then database, then presentation. पहले mail merge भी था. They have removed that. But right now you have to do 3 tasks. First one, this is document production. Task 2. Here you have to work on Word. अच्छा, Word सबको अच्छा आता है? Everybody know how to work on MS Word? Yes, sir. जी, Rehan? Yes, sir. Yes, sir. I've worked on this one. Okay, you can do that. So after document production, you have to work on database.
This is database. You will be given source file of database. Just you have to extract these files into your database, into Excel. Here is written, students at the Tawara High School are placed in one of 4 groups which are called houses. So these houses are Jupiter, Mars, Neptune, and Saturn. So you are now going to prepare some report based on school test. Using database software, import the file m23test.csv. Okay. So you have to import such kind of one. Give me 1 minute. Okay. Where will go? I will open database. Is this viewable? ये नजर आ रही है आपको स्क्रीन? No, yes, sir. Okay. From here, you will go to external data. You have to click on text file. Remember these steps, okay? I am basically recording with this video. I will upload so you can view from there. Click on browse and Sir, I cannot see anything. okay, wait. Just give me 1 second. I share it again. Give me 1 minute. Now you can see. Yes, sir. So I'm doing it again. Go to external data. Click on text file. Then click on browse. Okay. And okay, I'm searching basically my database. Source file. I'm searching basically source file. This one. So from here you have to basically extract the file. Which one? M23 test. Okay. So I will click on M23 test. Then okay. Okay. Here you don't need to have anything. Click on next. यहाँ पे आपने click करना है first row contain field. Okay. Click on next and then click on next. Here you have to define choose my own primary key. अच्छा primary key यहाँ पेपर में given होगा kind of that. Here is set string code as a primary key. तो इस field को हमने primary key बनाना है. This one. Okay. So हम it is already selected. Then click on advanced. So here you will be given option to change your basically data, field data type, whatever changes given here. यहाँ पे देखें. You have to compare your fields with that window. ये सारी field आपकी पहली 6 field जो है इन सबको text होना चाहिए. They must be text. You can see there. All fields are text. First 6. Then rest are basically long integer, and here you need to compare with this. Basically this one. Number. Okay. There are 4 fields are given.
And one thing given here, do not import the English field. So English field we have to remove from the table. It is asking. Yes, यहाँ पे clear है? यहाँ कोई परेशानी? No, sir. अच्छा, यहाँ पे देखें कि basically one thing. Wait a minute. Back. I need to go back. Do not import field. तो कौन सी field import नहीं करनी? English. Select this column and click on this. Now click on advanced. Now you can see all fields now given. अच्छा, ये जो fields हैं इनको आपने compare करना है अपने इस table के साथ. This table must be same with this table. Okay. Okay. So we need to compare with this long integer. Okay. And these 6 fields are given with this field. What we call number. Okay. This must be same. Okay. Then click on next. We have chosen the primary key. Click on next. Here you can give the name, table name. Now click on finish. And click on close. Okay. This table has come. Okay. This one. M23 test. Now you can view the record. So click on double click on table. So you will see different records on the screen. Okay, student. Is this clear? Rehan? Yes, sir. These are steps are clear with you? I will upload the video, okay? So you can revise. Got that? Yeah, okay. Okay, what about Shumail? Shumail, is this clear? Yes, sir. Okay. If there is any confusion, you can stop me and ask, okay? Question. Okay, now we need to see from paper what we have to do next. Place in your evidence document a screenshot showing the file name, field name, data type, and primary key used in the table. Okay, it is asking to show, basically, you have to show proof what you have done. So, another document will be given you. The name of document would be evidence document. Okay, on evidence document, you have to place the screenshot of the requirement. यहाँ पे देखेंगे हम इसको इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करें, ये आपके सामने डिजाइन व्यू आ जाएगा. ये जो व्यू होता है ये बेसिकली आपका डेटा व्यू होता है, ठीक है, वेयर यू कैन पुट द रिकॉर्ड. और ये वाला व्यू जो होता है ये बेसिकली डिजाइन व्यू होता है. नाउ इट इज आस्किंग टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. अच्छा, स्क्रीनशॉट के लिए आप कौन सा टूल यूज करते हैं हर्ष? विच टूल यू कैन यूज? Snipping tool. Snipping tool. If you don't know how to operate snipping tool, what you have to do? On laptop. Control plus Alt, no? Rehan, which option you will use? Taking screenshot. Snipping tool सबको आता है यूज करना? Yes. Okay. Shumail, also you? Shumail, do you know how to take screenshot? Sir, snipping tool, sir. Okay, good. Okay. Even if you don't know how to use, you can press print screen. Given a key on keyboard of laptop. Okay. I press print screen. Then open any Word document. Right now I'm opening any document. You will be provided evidence. Okay. Here, like evidence will be written here. Evidence. Kind of that. And here you can place a screenshot of the given. It says basically, it should show place in your evidence document a screenshot showing the field name, data type, and primary key. Okay. Now this is field names, this is primary key, and this is data type. Only these 3 columns you have to show. So you have to double click on this, crop, you can crop. Okay. And if you are using just you have to show this one. So you can spread
Is it viewable? So we have take screenshot of feeds. These are feeds. This is data type, and this is primary key. Got that? Everybody got that? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now next task we need to see. अच्छा आपका पेपर और डेटाबेस दोनों नजर आ रहे हैं? If there is जी nothing सर, to नजर show, आ रहा है. okay, you can ask me. Okay. Task number 19 of database, import the file m23houses.cs. Now, second file we have to import. Set the house code field as the primary key. Okay. फिर ये third file कह रहे हैं, examine the file m23 staff.csv to identify the most appropriate field to use as a primary key. So import this file as a new table in your database using this field as the primary key. तो ये भी कह रहे हैं कि आप m23 staff को आप open करें और check करें कि which field can be given as the role of primary key. We can do it when we're importing. Okay. Moving to database, close this one. इसको close कर दें. अच्छा इसको मैं delete कर देता हूँ. ठीक है, ये table हमें required नहीं है. You can delete from here. You can delete also this one. हमें सिर्फ 3 table चाहिए. अच्छा this table is open. Okay. Now go to external data. Click on text file. Click on browse. You have to move that area where you have saved these 3 files. I will tell you how to access these files. Okay. Now which table you have to extract? Basically, you have to click on m23 house. ये table आपने extract करना है, ठीक है? So m23 house is given here. इसको open कर दें. Click on OK. This window will appear. यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना. Click on next. ये first row contain field name. You have to do that. यहाँ पे आपने click कर दिया. Advanced में चले जाएं. Compare these fields with database. If there is given, no fields are given, so we have to rely on this one. Okay. कोई changes नहीं है. Click on next. यहाँ पे आपने primary की choose करनी है, which is already given in paper. Which field? House code. You have to select field house code as a primary. So it is selected by default. Okay, next. Back. House code. Okay, ठीक है. यहाँ पे हम select करेंगे choose on primary key. The house code is selected. Next. Okay, D. Harsh, you want to ask something? Yes, sir. Pardon me. Can I come back in 5 minutes? Okay, you can come. I just need something. Okay. Okay, then click on finish and click on close. ये Rehan and Shumai, can you tell me ये steps clear है आपको? जी सर. जी सर, क्लियर है. अगर कोई issue हो तो you can ask. Okay, so ये basically these are steps to extract the table into your database. Okay, then I'm moving to third. अब हमने थर्ड टेबल को एक्सेस करना है m23 स्टाफ. ठीक है, गो टू एक्सटर्नल, क्लिक ऑन टेक्स्ट फाइल, क्लिक ऑन ब्राउज, m23 स्टाफ को सिलेक्ट करें, ओपन एंड देन क्लिक ऑन ओके. ठीक है, ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट. ओके, फर्स्ट रो ये आपने लाजमी क्लिक करना है. फर्स्ट रो कंटेन फील्ड नेम. ओके, नेक्स्ट. क्लास कोड इज गिवन. आई थिंक इन 4 फील्ड में से सिर्फ क्लास कोड इज यूनिक. दैट शुड बी एज ए प्राइमरी की. यहाँ पे हम चूज कर लेंगे, चूज ऑन प्राइमरी की. क्लास कोड इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट. क्लिक ऑन नेक्स्ट, फिनिश एंड क्लोज. So these steps are clear? Yes sir. Okay, good. अच्छा, तो यहाँ तक हमने कर लिया. ये टास्क नंबर 19 भी आपका हो गया. ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से इट इज आस्किंग अगेन, प्लेस इन योर एविडेंस डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट एविडेंस शोइंग द फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड द प्राइमरी की यूज इन ईच टेबल. अच्छा, इन दोनों टेबल्स की हमने स्क्रीनशॉट लेना है. गो टू डेटाबेस, m23 स्टाफ हमने बनाया अभी.
और टेस्ट का तो हम ले चुके हैं। यहाँ पे जाएंगे, ये आप स्क्रीनशॉट लेंगे, क्लिक ऑन प्रिंट स्क्रीन, गो टू एविडेंस डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हम एविडेंस पीएस को एविडेंस 1 कर देते हैं। ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एविडेंस 2, ठीक है, और एविडेंस 3। ये डॉक्यूमेंट आपको गिवन होगा, ठीक है। ओके, तो गो टू डेटाबेस, क्लिक ऑन प्रिंट स्क्रीन, यहाँ पे क्लिक वर्ड पे जाएं, पेस्ट इट, डबल क्लिक करें, यहाँ से क्रॉप कर दें, ठीक है। यू कैन यूज स्निपिंग टूल, दिस एरिया ओनली यू हैव टू शो। उसके बाद इसको स्प्रेड कर दें, ठीक है, ठीक है। तो इट इज, ये व्यूएबल होना चाहिए, इट शुड बी व्यूएबल। ओके, मूव टू डेटाबेस, क्लिक ऑन M23 हाउस, ठीक है, प्रिंट स्क्रीन, ठीक है, यहाँ प्लेस करते हैं, कंट्रोल V, डबल क्लिक करें, सिलेक्ट क्रॉप, एंड देन Sir, will I lose marks if I do not crop it? which one? Will I lose marks if I do not crop the screenshot? You will not lose mark, but it should be clear. Basically, Okay. you should show the relevant. Okay, this one should be viewable and relevant. इससे क्या होता है, आपका काम जो है ना मतलब प्रेजेंटेबल होना चाहिए, ठीक है। और वो, Yes, sir. डू यू नो हाउ टू यूज स्निपिंग टूल? Yes, I do. तो आप वहीं पे जहाँ पे सोर्स हम पिक कर रहे होते हैं ना, वहीं पे आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, शो ओनली द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, Okay, thank you. वरना अदरवाइज क्या होगा, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, तो व्यूएबल नहीं होगा। ओके, दिस वन इज क्लियर, यहाँ तक क्लियर आपको? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद यहाँ पे टास्क नंबर 20 पे कह रहा है एडिट द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन द टेस्ट टेबल। टेस्ट टेबल को हमने ओपन करना है और वहां पे हमने इस रिकॉर्ड को एडिट करना है। क्लास कोड जो आ रहा है चेंज फ्रॉम 6B to 6T कर देना है। तो हम किस तरह एडिट करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लें आप, ये वाला इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट दिस वन, कंट्रोल C, गो टू डेटाबेस, इसको क्लोज कर दें। और कौन सा टेबल का है, टेस्ट टेबल। ओके, M23 टेस्ट, इसको डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करके ओपन में क्लिक करें, ये आपका ओपन हो जाएगा। नाउ हाउ टू सर्च, यहाँ पे ऑप्शन है फाइंड, कैन यू सी फाइंड, वेयर इज फाइंड टेबल, होम, फाइंड, वेयर इज फाइंड, I am unable to enter. You need to basically search a field is find, where is find, I am unable to find. Okay, you can go through 2016, यहाँ पे I think it is hidden, so you have to go through record 2016. Can you see that 2016? It should be 2016 029 ना, 029, ये यहाँ पे आ जाएगा। This one, okay, 6B, इसको आपने 6E कर देना है, do that. Okay. बस ये चेंजेस, ये स्टेप समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फाइंड, आप फाइंड पर क्लिक करें, हाँ ये रहा ना, रिप्लेस, हाँ ये रहा, ये रहा, यहाँ पे आप पेस्ट कर दें और फाइंड पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये उसी रिकॉर्ड पे चला जाएगा। इट शुड गो बट नॉट गोइंग, ठीक है, ऑलरेडी वहां पे ही है, ठीक है। नॉट वर्किंग बट यू कैन डू। ओके, तो ये हमने 6B को 6T कर दिया। शुमाइल, इज दिस क्लियर? जी सर, ये क्लियर है। ये आपने सर जो है, ये आपने इसको डबल क्लिक करके जो आता है वो है ना?
हाँ बिल्कुल, ये मैं दोबारा बताता हूँ कि देखें, ये डेटाबेस आपके सामने है, टेबल आपके लेफ्ट जी साइड पे आ रहे होंगे ना, ठीक है ना। तो जी उसने कहा है कि जो टेस्ट टेबल है ना, ये टेस्ट लिखा हुआ है, एंटर द फॉलोइंग जी रेकॉर्ड इन टेस्ट टेबल, ठीक है ना। उसने कहा है कि इस रजिस्ट्रेशन कोड को सर्च करें और उसके क्लास कोड में ये वाला डेटा चेंज 6B को 6T कर दें। सही है, जी 6B को 6T जी कर सर। दें। तो मैं डेटाबेस पे गया, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे टेबल आ रहा है, आप राइट सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, ओपन भी करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। जी और अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ठीक है। अब आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं या फिर गो थ्रू करें वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड जहाँ पे चेंजेस करनी है, ये है। तो इसके क्लास कोड में यहाँ पे पहले 6B लिखा हुआ था, इसको हमने 6T कर दिया। ठीक है सर, समझ आ गया। यहाँ तक समझ आ गया। जी अच्छा, सर। उसके बाद है 21, क्रिएट वन टू मैनी। अच्छा, ये बात मैं बताना भूल गया कि जो टेबल्स हम क्रिएट करते हैं ना, इसके हम तीन तरह के टेबल, सॉरी, थ्री डिफरेंट टाइप्स रिलेशनशिप जो है अमंग टेबल वी कैन क्रिएट, वन टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी। लेकिन आपके कोर्स में ज्यादातर वन टू मैनी आता है कि वन टू मैनी रिलेशनशिप आपने डिफाइन करना है, यानी टेबल को आपस में लिंक करना है। तो लिंक करने के तीन मेथड है, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। हर्ष, आर यू देयर? Yes, sir, I'm back. Okay. Do you know how many types of relationship in database? Yes, sir, there's three. Okay, good. Name that. One to one, one to many, and many to many. Okay, that's good. So normally in your practical paper, one to many comes. Am I right? Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे आपको बेसिकली टेबल के दरमियान लिंक बनाना है. Then that link is called relationship. That link is called relationship. तो हम देखते हैं how to make that. शुमाइल, मेरा पॉइंट क्लियर है आपको? जी सर, clear। अच्छा, हम रिलेशनशिप बनाते क्यों? बेसिकली हमने मल्टीपल टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है. टेबल मस्ट बी रिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है ना. रिलेटेड इसी सेंस में जब हम उनको रिलेट करेंगे, वी विल हैव अ रिलेशनशिप ऑफ टेबल. तो वी नीड टू डिफाइन टेबल रिलेशनशिप. तो आई विल गो टू डेटाबेस. यहाँ से आपने डेटाबेस टूल पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन रिलेशनशिप. ओके, फ्रॉम हियर basically you can click on double click. Okay, this one and this one. उसके बाद इसको क्लोज कर दें, इसको एक्सपेंड कर लें, इसको भी एक्सपेंड कर लें. अच्छा, M23 टेस्ट को मैं सेंटर में रखूंगा बिकॉज M23 के अंदर बेसिकली M23 जो स्टाफ टेबल, इसका क्लास कोड आ रहा है, ठीक है, दिस वन क्लास कोड. तो ये यहाँ से लिंक कर रहा है और यहाँ पे इसका हाउस कोड वो भी इसको लिंक कर रहा है. इसलिए मैं M23 को सेंटर में रखूंगा क्योंकि ये दोनों टेबल से लिंक हो रहा है. अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जिस टेबल में प्राइमरी की डिफाइन की जाती है दैट टेबल इज कॉल्ड पेरेंट टेबल या मास्टर टेबल. और जिस टेबल में हम प्राइमरी की को शिफ्ट करते हैं दैट टेबल इज कॉल्ड चाइल्ड टेबल और ट्रांजेक्शन टेबल. ठीक है, ये प्राइमरी की बनी हुई है, ठीक है. इसको मैं यहाँ पे करूंगा, लेफ्ट माउस बटन प्रेस करते हुए इसको मूव करूंगा, हाउस कोड को ज्वाइन करूंगा हाउस कोड के साथ. ये आपने यहाँ पे क्लिक कर देना. आपके सामने एक और विंडो आ जाएगी, एड रिलेशनशिप विंडो. यहाँ पे आपने इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को क्लिक कर देना. और डू यू नो व्हाट इज दैट इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? No idea, but my teacher always told me that you had to like put a tick on it. I didn't know until now what it is. Basically, enforce referential integrity. Can you tell me the name, the meaning of integrity? What is general meaning? Integrity. What is meant by integrity? Anybody can tell me? Hello? Can anybody tell me what is meant by integrity? This integrity. Basically, No sir। okay. Why we put check on enforce referential integrity mean? इसको जब आप क्लिक कर देते हैं तो जब मैं पहले क्रिएट पे क्लिक कर दूं, ये देखें, ये वन टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पे शो करेंगे. एक तो ये, दिस इज वन. इट मींस के मास्टर टेबल विल हैव अ वन रिकॉर्ड ऑफ हाउस कोड, बट
transaction table can have many record of house code. ठीक है, and why we put check on enforce referential integrity. जैसे मैंने आपको बताया था कि वो फील्ड जो अपने टेबल में प्राइमरी की होती है, जब वो दूसरे टेबल में ट्रांसफर होती है तो यहाँ पे फॉरेन की बन जाती है, रेफरेंस की भी कहते हैं, फॉरेन की भी कहते हैं. अच्छा, द पर्पस ऑफ enforce basically to make sure the record exists here must be transfer here, यानी इस टेबल में भी आपको नजर आने चाहिए. ठीक है, वो टेबल मस्ट हैव अ सेम रिकॉर्ड, लेकिन यहाँ पे वंस होगा और यहाँ पे मैनी टाइम होगा रिलेटेड टू हाउस कोड. गॉट माय पॉइंट? डिड यू गेट माय पॉइंट? शुमाइल, ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? शुड एक्सप्लेन अगेन? जी सर, क्लियर है। हाँ, इसका मतलब होता है कि जिस टेबल में प्राइमरी की है वहां पे इसका रिकॉर्ड एक दफा आएगा. मैं इसको इस वाली M23 स्टाफ की क्लास कोड को पिक करूंगा, प्लेस हेयर, ये एडिट रिलेशनशिप विंडो विल अपीयर, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है. अगेन शोइंग वन टू मैनी, ये आपने मेक श्योर करना है कि वन टू मैनी नजर आ रहा हो और उसको हम क्रिएट करते हैं. अच्छा, सम टाइम अभी इसमें मांगेंगे आपसे कि इसका स्क्रीनशॉट शो करें. प्लेस इन योर एविडेंस डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट शोइंग द वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन टेबल. अच्छा, मैंने रिलेशनशिप किस बेस पे डिफाइन की, यहाँ पे मेंशन है द प्राइमरी की फील्ड ऑफ द स्टाफ टेबल एंड द क्लास कोड ऑफ द टेस्ट टेबल. इनका रिलेशनशिप बना दी, हमने बना दिया. द प्राइमरी की फील्ड ऑफ द हाउस टेबल एंड द हाउस कोड फील्ड ऑफ द टेस्ट टेबल. तो इन दोनों फील्ड का आपस का लिंक बनाना है. वी हैव डन दैट. अच्छा, ये आपसे स्क्रीनशॉट मांगेंगे, आपने क्या करना है, इस लाइन पर डबल क्लिक कर तो ये विंडो अपेयर हो जाएगी. पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है, फर्स्ट पहले मैंने स्क्रीन कर दिया और यहाँ पे एविडेंस लिख देता हूँ. एविडेंस 4. ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये आ गया. डबल क्लिक करें और इसको क्रॉप कर दें. शो ओनली रिक्वायर्ड डेटा. ठीक है, इसलिए क्रॉप कर दें तो श्रिंक कर दें. ओके, तो इसको थोड़ा स्प्रेड कर दें तो इट शुड बी विजिबल. तो इस तरह आपने शो करना है. दूसरा, आपने ये मैंने क्लोज कर दिया, इस पर डबल क्लिक करें. यू हैव टू शो बेसिकली, एक सेकेंड तो थोड़ा मूव कर देता हूँ, ये यहाँ मूव कर दिया. इस पर क्लिक करें, जगह बन गई और इसको यहाँ पे ले थोड़ा सा इधर थोड़ा इसकी सेटिंग कर लिया करें ताकि आपको आइडिया हो जाए. ब्लैंक आ गया. ओके, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, प्रिंट स्क्रीन, यहाँ पे डबल क्लिक. So you can spread, it should be viewable. ओके, ये क्लियर है, आपको नजर आ रहा है? Everybody is yes. Harsh, is this clear? जी सर, मजा आ रहा है। Hi, रेहान. Yes, sir. ओके, ये हम क्लोज कर देंगे विंडो, यहाँ पे सेव कर दें इसको. ठीक है, नाउ वी नीड टू सी हियर. अब आ जाते हैं जो लेंथी पार्ट है, दैट इज रिलेटेड टू क्यूरी एंड रिपोर्ट. यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग फील्ड फ्रॉम ऑल टेबल प्रोड्यूस अ टेबुलर रिपोर्ट दैट सेलेक्ट द रिपोर्ट वेयर. अच्छा, रिमेंबर, रिपोर्ट बनाने से पहले आपने क्यूरी बनानी है. यू हैव टू डिजाइन अ क्यूरी. ऑन द बेसिस ऑफ क्यूरी वी कैन मेक अ रिपोर्ट. ओके, और ये जो दिए हुए ना, जेंडर एफ, जेंडर कॉलम यानी सारे फीमेल होने चाहिए, साइंस इज 80 होना चाहिए, क्लास कोड जो है 6 होना चाहिए. ये क्राइटेरिया है. क्योंकि जो क्यूरी बनती है ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया और कंडीशन. तो होता क्या है कि आपका जो रिकॉर्ड है वो फिल्टर हो जाता है, क्योंकि रिकॉर्ड्स आर मैनी. अभी जैसे मैं आपको शो करता हूँ, आई एम गोइंग टू डेटाबेस. आप किसी भी टेबल पर क्लिक करें, देखें इसमें कितने 5 हैं, इसमें 6 हैं. नाउ सीट M23 टेस्ट 176 रिकॉर्ड आर देयर
एंड वी हैव टू फिल्टर ऑल रिकॉर्ड्स। तो हमें फिल्टर करने के लिए क्यूरी लगानी पड़ती है, ठीक है। तो आई एम क्लोजिंग दिस टेबल्स। हाउ टू क्रिएट क्यूरी, गो टू क्रिएट, क्लिक ऑन क्यूरी डिजाइन। ओके, ये क्यूरी डिजाइन हो गया। यहाँ से आपने टेबल पिक करने हैं, पहले हाउस पिक कर लें, फिर टेस्ट पे क्लिक करें, फिर स्टाफ पे क्लिक करें। इस तरह ये इसको क्लोज कर दें और इसको जरा एक्सपेंड कर लें, ठीक है, थोड़ा स्प्रेड कर लें। नाउ सी शोज ओनली द फील्ड नेम। अच्छा, ये सिर्फ यही फील्ड पिक करनी है जो यहाँ पे कहा गया। पहले हम फील्ड पिक करेंगे, फिर हम क्राइटेरिया लगाएंगे, ठीक है। जब हमारी क्यूरी बन जाएगी तो फिर हम रिपोर्ट बनाएंगे। नाउ सी शोज ओनली द फील्ड फैमिली नेम, ठीक है। सबसे पहले उसने कहा फैमिली नेम, तो फैमिली नेम आपने यहाँ से सर्च करना है, क्लिक ऑन डबल, आप इसको डबल क्लिक कर दें, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, उसके बाद जेंडर, जेंडर कहाँ पे, जेंडर दिस वन, डबल क्लिक कर दें, ठीक है। जेंडर, टीचर नेम और साइंस, टीचर नेम कहाँ से मिलेगा, ये टीचर नेम है। उसके बाद साइंस, वेयर इज साइंस, मैथ कहाँ गया, हाँ दिस वन, साइंस पे क्लिक कर दीजिए। यू हैव टू फॉलो सीक्वेंस, ये आपने सीक्वेंस फॉलो करना है जिस सीक्वेंस में यहाँ पे फील्ड दी हुई। मैथ, कंप्यूटर साइंस, ओके, मैथ, मैथ आपका कहाँ है, मैथ। उसके बाद कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करें और And then design technology. है, दोबारा बोले, The next is design technology. या ओके, डिजाइन टेक्नोलॉजी एंड हाउस नेम, डिजाइन टेक्नोलॉजी दिस वन, एंड उसके बाद क्या था, हाउस नेम एंड क्लास कोड। हाउस नेम ये गिवन है और क्लास कोड आपने यहाँ से पिक करना, ठीक है। ऑल फील्ड हैव बीन डन। अच्छा, यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 176। कैन यू सी दैट 176 रिकॉर्ड, Yes, sir. ठीक है। तो बेसिकली अभी बिफोर क्राइटेरिया ये आपको 176 रिकॉर्ड नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप व्यू पे क्लिक करें, डिजाइन व्यू पे चले जाएंगे, ये डिजाइन भी ओपन हो गया। अब सबसे पहले क्राइटेरिया हम पुटअप करेंगे काइंड ऑफ दैट जेंडर शुड बी फीमेल, ओके। मैं यहाँ पे जाऊंगा जेंडर कॉलम, अंडर जेंडर कॉलम, यहाँ पे सिंपली एफ लिख दें और क्लिक ऑन आउटसाइड, तो ये एफ आ जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ रन पे क्लिक कर रहा हूँ। हाउ मेनी रिकॉर्ड, रेहान कितने रिकॉर्ड है, रेहान टेल मी हाउ मेनी रिकॉर्ड यू कैन व्यू। आपको रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं, Sir, 84. 84। शुमाइल आपको नजर आ रहे हैं, ये सर नजर आ रहे हैं 84। हमने अगर हम जेंडर की बेस पे फिल्टर करेंगे, ऑल फीमेल रिकॉर्ड विल बी शोन, तो ये सिर्फ 84 है, 84 फीमेल रिलेटेड डेटा यहाँ पे एंटर है। यहाँ पे चले जाएं, डिजाइन पे क्लिक करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्राइटेरिया है साइंस इज 80 और मोर, साइंस कॉलम में जाएंगे, साइंस, वेयर इज साइंस, दिस वन, इसी रो में ये क्राइटेरिया रो है, ठीक है, ये क्राइटेरिया रो है। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ये आपने क्राइटेरिया पुट अप कर दिया। क्लिक ऑन रन। अब कितने रिकॉर्ड हो गए, अर्श हाउ मेनी रिकॉर्ड आर देयर, 49. 49, so it has been filtered, okay. Next criteria is class code contain 6, class code contain 6, तो ये क्राइटेरिया दे देंगे, ठीक है। मूव टू डजन, दोबारा देखें क्या लिखा हुआ है, हाँ क्लास कोड 6। अच्छा, क्लास कोड यहाँ पे आ रही है, तो इट शुड बी 6। अच्छा, यहाँ पे हमने करना क्या है कि नॉर्मली हमारे डेटाबेस को जो अगर हम जैसे यहाँ पे देखें, एक सेकंड ये गलत हो गया, एक सेकंड इसको 6 को मैं हटा देता हूँ। अच्छा अच्छा, रिकॉर्ड अगर क्राइटेरिया गलत होगा ना तो रिकॉर्ड शो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे देखें क्लास कोड किस तरह दिया हुआ है, 6T6L, ठीक है। तो 6 के बाद T आ रहा है, L आ रहा है या कोई और आ रहा है, 6B भी आ रहा है, तो हमने वो रिकॉर्ड शो करने जिसमें 6 आ रहा है, जिसमें 6 आ रहा है। अगर मैं खाली 6 लिखूंगा तो वो शो नहीं करेगा। इसके लिए मैं एक और टेक्निक यूज करूंगा, वाइल्ड कार्ड। क्या यूज करूंगा, वाइल्ड कार्ड। 6 यहाँ पे 6 लिख के 6 के बाद कोई लेटर आ रहा है तो उसके लिए मैं वाइल्ड कार्ड, ये मैंने क्लिक कर, ये देखिए 6 के बाद मैंने लगा दिया वाइल्ड कार्ड। अब नाउ T,
अब देखें, all record has been shown which have class code 6. अब record कितने हो गए? 27, sir. अच्छा, ये समझ में आया वाइल्ड कार्ड क्या होता है? हर्ष, you can tell me, can you tell me? Yes, wildcard is any like digit or like letter after the code. Yeah, you can say wherever 6 is coming, that record should be shown. Okay. Yes, sir. After 6, is there any letter coming? Yeah, you can say before letter, if 6 is coming, that record should be shown. Rehan, my point is clear? Yes, sir. And Shamail, आपको क्लियर हुआ कि आपने वाइल्ड कार्ड क्यों यूज किया है? 6 के बाद नहीं मैंने सर। हाँ देखो 6 के बाद मैंने वाइल्ड कार्ड लगाया है, ये आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा ना। अच्छा, मैं आपको इसको वर्ड पे करता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, हमने पहले लिखा 6, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हमने पहले क्या लिखा? 6, और उसके बाद हमने ये स्टैरिक, इसको कहते हैं वाइल्ड कार्ड। क्या कहते हैं? वाइल्ड कार्ड। अच्छा, इसको आप लाइक करके भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना लाइक, तो वो लाइक खुद ब खुद ले आता है वैसे ये ऐसे। इसका ये बेसिकली क्राइटेरिया है। ये कहना चाह रहा है अगर मैं खाली 6 लिखूंगा ना तो वो रिकॉर्ड शो नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या। यहाँ पे जो क्राइटेरिया है जो गिवन, जैसे 6 के बाद कोई भी लेटर है आपने रिकॉर्ड शो करना है, तो उसके लिए मैं वाइल्ड कार्ड यूज कर रहा हूँ। वाइल्ड कार्ड का मतलब होता है ऑल, ठीक है ना। 6 के बाद कोई भी लेटर आ रहा है, कोई भी कैरेक्टर आ रहा है, उसको भी शो करना है आफ्टर 6। पहले 6 होगा, उसके बाद वो एक, क्या वो सिंगल लेटर हो मल्टीपल लेटर हो, वो शो करेगा, लेकिन पहले क्या होगा? 6। आप समझे मेरी बात? तो वाइल्ड कार्ड, अगर मैं वाइल्ड कार्ड यहाँ पे लगा दूंगा दोनों तरफ, तो इसका मतलब होगा कि 6 शुरू में हो, 6 मिड में हो, 6 एंड में हो, आपने शो करना है वो रिकॉर्ड। और अगर मैं ये वाइल्ड कार्ड हटा देता हूँ, स्टैरिक 6 लिख देता हूँ, तो इसका मतलब होगा कि अगर एंड में 6 आ रहा है तो रिकॉर्ड शो करें, और उससे पहले जो भी आ रहा है वो आप उसके साथ शो करें। आपको समझ में आ रही बात? ठीक है तो जी हमारा सर, समझ असल में हमारा जो रिकॉर्ड है वो 6B है या 6T है या 6L है, तो हमने क्या किया, 6 के बाद वाइल्ड कार्ड लगा दिया। 6 के बाद वाइल्ड कार्ड लगा दिया। अब वो 6 के बाद कुछ भी आ रहा हो वो 6 से रिलेटेड डेटा आपको शो करेगा। नाउ यू कैन सी दैट। इधर ये देखें, ये सारे देखें 6 पहले आ रहा है, उसके बाद सारे लेटर आ रहे हैं। तो 6 के बाद वाइल्ड कार्ड लगाने का बेनिफिट ये हुआ कि वो एक तो 6 से रिलेटेड रिकॉर्ड शो करेगा, और उसके बाद जो कुछ भी आ रहा है वो भी शो कर देगा। बी भी शो कर रहा है, एल भी शो कर रहा है, और क्या है, टी भी शो कर रहा है। डिड यू गेट? जी सर, ओके, आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। कल मैं इसको कंप्लीट कर लेंगे, और ये आपकी जो क्यूरी है 22 को पूरा करेंगे, इस पर रिपोर्ट बनाएंगे, फिर 23 की रिपोर्ट बनाएंगे, क्यूरी बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, और जो फर्दर टास्क है 24, ये 24 पे एंड हो जाए आपका डेटाबेस। हाउ कैन यू डू प्रैक्टिस कैसे करेंगे इसकी? हर्ष, हाउ विल यू डू दैट? Do you have? Just run my. Yeah, you can just run Microsoft Access, and then I can. There's. What about source file? Do you know how to access source file and? Yes, sir. I know. You know that? Okay. Yes, sir. अच्छा, Yes, कल sir. मैं आपको बता दूंगा कि सोर्स फाइल कैसे एक्सेस करनी है, उसको आपने अपने फोल्डर में सेव कैसे करना है, ठीक है, और फिर आपने पेपर ओपन करके इसको परफॉर्म कैसे करना है। और मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? जी ठीक है सर। रेहान एंड शुमाइल, डिड यू गेट? यस सर। तो कल इंशाल्लाह इसी सेम टाइम कंटिन्यू करेंगे। पहले पेपर कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हम पेपर 1 जो भी थ्योरी पार्ट है उसको भी कवर अप कर लेंगे, ठीक है। और मैं आपके चैप्टर 1 के साथ ही आपके जो पेपर बेस्ड क्वेश्चन है वो साथ ही डिस्कस करूंगा, ओके, ताकि आप पेपर 1 डे 1 से पेपर के साथ अटैच होना चाहिए आपको। सीआई पेपर जो आते हैं, ठीक है, टॉपिक के साथ हम जो सीआई के पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो भी मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा, ओके, टॉपिक बाय टॉपिक। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Allah Hafiz. Have a nice good night, okay? Okay. Allah.